Hello everyone, welcome back in today's class. Dear students, 4 questions of exercise 8.2 we have discussed in our previous video. Today we will start with question number 5. Find the whole quantity. आपको पूरी quantity find करनी है if 5% of it is 600. So जो ये it word है this is unknown to us. हमें नहीं पता whole quantity कितनी है और ये जो it word है वो whole quantity के लिए use हुआ है. So 5. If we will remove this percentage, what will come down? 100. Of means multiply, and in place of this it, what we will write? X is equal to, that is 600. This is the one thing. How can we convert it into equation? We can reduce it further. If they are cutting, it will be 1 by 20. X multiply by 1x and 20 will be down is equal to 600. Now 20 is in division. When I will take it to the other side, it will be 20 multiplied by 600. So what is the value of whole quantity? That is 12,000. You can write whole quantity that is 12,000. Okay. Now next is 12%. 12 percentage means who will come down? 100. Of means multiply. It means unknown quantity. That means we will take it as x is equal to 1080. It is given 1080. We can reduce it further by the table of 4. I am cutting. Here it will be 3. Here it will be 25. 3 multiplied by x, I will get 3x upon 25 is equal to 1080. x को वहीं पे रहने दें और 3 by 25 को आप कैसे बना सकते हैं? You may write it as 25 divided by 3. If this is 3 by 25 this side, when I will take it to other side, it will be 25 by 3. If you want, you can cut it by the table of 3. 3 3 is 9, 3 6 is 18, 0. Now you can multiply the term 0, 25 6 is 150. 15 carry 0 I have written here. 25 3 is 75. 75 plus 15 I will get 90. So what is my answer? That is 9,000. Fine. Let us see next part of it. 40%. Percentage means down 100 will come. Of multiply it means x is equal to 500. Fine. If you want to reduce, you can reduce by the table of 2. I am cutting. It is 2x upon 5 equals to 500. X equals to, see the same step I am doing here, 5. 2 by 5 will become 5 by 2 here. If you want to cut, you can cut by the table of 2. It is 250. 250 multiplied by x, that is 1250. Okay, this will be the answer. The next is 70%. That means 70 upon 100 multiplied by x, that means unknown quantity is equal to 14. Fine. This can be reduced. It is 7x upon 10. It cannot be reduced further. So we will write it as it is. X is equal to 14. 7 by 10 will become your 10 by 7. You can cut by the table of 7. So what will be the value of whole quantity? That will be 20. Okay. See next of it. 8 divided by 100 of it. X is equal to 40. So x is equal to, see how can I write 40? If I want to reduce it, I can reduce it. It will be by the table of 4 I am cutting. It will be 2. It will be 25. If this is 2 by 25 this side, I will take it to other side. It will become 25 by 2. Cut by the table of 2. 25 multiplied by 20. I will get 500. So this is my whole quantity, value of whole quantity. These were 5 parts of question number 5. I hope you all have understood it well. Now let us come to question number 6. Convert given percentage to decimal fractions and also to fraction in the simplest form. First we need to convert it into decimal form and we have to convert it into simplest form. See how can I convert? Decimal form 25. Remove this percentage. What it will be? It will be 100. और स्टूडेंट अगर नीचे 2 zeros होती हैं तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होने ज़रूरी हैं? 2 डिजिट्स होना ज़रूरी है. Simplest form 25 upon 100. By the table of 5 I am cutting. It will be 5. Here it will be 20. Again I can cut. It will be 1 divided by 4. This is the simplest form. Now let us go for another part. 150 divided by 100. I have to write the
decimal form 10. If it is cancelable, we can cancel. Now it is 15/10. I have to bring decimal. If 10 is there after as a denominator, so one digit will be there after decimal. This is the decimal form. I have to reduce it to the simplest form. 150 divided by 100. I can cut by the table of 5. Here it will be 3, here it will be 2. This is the simplest form. Let's go for the next. 20 divided by 100. If it is cancelable, I will cancel it. 2 divided by 10. 10 after decimal 1 digit. Okay, this is the decimal form. Let us see the simplest form. 20 upon 100. 10 cancel. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. What is the simplest form? 1/5. मतलब इसमें हमें सारों में डेसिमल लगाना, इसमें कट करना है ना. सिंपलेस्ट फॉर्म वी हैव टू कट हियर. Now 5 divided by 100, we have to put decimal, 2 zeros, that means 2 numbers will be after decimal. Okay, 2 numbers are there, no? If 1 is there, we will make 1 by ourselves. This is what we have done in our previous chapters. And the next 5 divided by 100, we can cut 5 1 ja 5, it will be 20. So what will be my answer? 1/20 will be my answer. So here I have mentioned all the decimal form. Here I have mentioned all the simplest form. Let's go for question number 7. Student, question number 7 says, in a city 30% are female, 40% are males. Percentage of females, it is given in the question. Percentage of female, we will make statement. Female की percentage कितनी है? Percentage of females equals to 30%. It is given in the question. Percentage of males, it is again given in the question. That is 40%. They are asking what is the percentage of children. Okay, अब एक चीज़ ध्यान से सुने. मेल, फीमेल और चिल्ड्रन मिला के टोटल 100% बनाते हैं, बिकॉज दे आर द 3 इन द सोसाइटी. मेल आते हैं, फीमेल आते हैं या फिर चिल्ड्रन आते हैं. टोटल मिला के इन सब का 100% हो सकता है, जिसमें से 30 फीमेल और 40 मेल जा चुके हैं. तो 70% इसमें से जा चुका है. तो जो परसेंटेज बचेगी वो किसकी बचेगी? स्टूडेंट, चिल्ड्रन की बचेगी. सो आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन. what will be the percentage of children? It will be 30%. If I want to add 30 plus 40 70, 70 plus 30, that means total it should be 100. So what is the percentage of children in the society? In the society it is 30%. Fine, it was an easy question. Question number 8. Out of 15,000 voters, total voters, there are 15,000 total voters. How many voters are there? 15,000 voters. They are saying out of total 15,000 voter in a constituency, 60% voted. So percentage of voters who voted, कितने लोग वोट करके आए हैं? That percentage is 60%. Find the percentage of voters who did not vote. अब जो वोट करके आए हैं वो 60% है. जो वोट नहीं करके आए हैं दोनों मिला के 100 होते हैं. द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, जिन्होंने वोट ही नहीं दिया है. अब देखो, हु डिड नॉट वोट 60% है जो दे के आए हैं. जो नहीं दे के आए हैं वो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा. दोनों का मिला के 100 होना चाहिए. ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट. दिस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ये आपको पता लगाना है. बट द क्वेश्चन इज आस्किंग कि कैन यू फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, कितने लोगों ने वोट नहीं दिया है. दे आर आस्किंग अबाउट द नंबर. पहले उन्होंने परसेंटेज पूछा है, नाउ दे आर आस्किंग अबाउट द नंबर. देखो कैसे करेंगे. नंबर ऑफ वोटर्स हु डिडंट वोट, जिन्होंने वोट नहीं किया. देखो कैसे करते हैं. 40% ने वोट नहीं किया है, हमारे पास ये डेटा है. जिन्होंने वोट नहीं किया 40% ऑफ, हम कैसे निकालते हैं? 40% ऑफ 15,000. टोटल का हमेशा ही ये निकलता है. टोटल तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और जिन्होंने वोट नहीं किया उन्हीं का तो नंबर हमसे मांगा जा रहा है, तो उनका नंबर, उनका परसेंटेज कितना है? 40. अब हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं. 40, इफ आई विल रिमूव दिस परसेंटेज, हु विल कम डाउन? 100. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड 15,000. These two zeros are cancelled. 150. If I multiply by 40, I will get 6,000 voters.
दैट मीन्स 6000 लोगों ने वोट नहीं किया. ओके, आउट ऑफ 15,000. Question number 9. Question number 9 says Meena saves ₹400 from her salary. मीता जो है अपनी सैलरी से 400 रुपीज़ सेव करती है. इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, वट इज़ हर सैलरी? उसकी सेविंग बता दी है, बट वी डू नॉट नो अबाउट हर सैलरी. हम अगर हमें किसी चीज़ का नहीं पता और वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो हम उसको लेट करते हैं. लेट मीताज सैलरी बी ₹X. परसेंटेज ऑफ हर सेविंग, कितना सेव करती है वो? 10%. हर सेविंग दैट इज़ 10%. और क्या है हमारे पास, वो एक्चुअली कितना सेव करती है, और हर सेविंग देखो उसकी सेविंग रुपीज़ में भी गिवन है. हर सेविंग ₹400. तो देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखेंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी सेविंग का परसेंटेज कितना है? 10%. और ये 10% को हम कैसे लिख सकते हैं? 10/100. और ऑफ वो हमेशा किसका होता है? सैलरी का होता है. जो ये परसेंटेज होता है वो हमेशा किसका होता है? टोटल का होता है. टोटल सैलरी कितनी है? X. और कितना सेव करती है वो? 400. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. हर सेविंग, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हर सेविंग? 10%. I removed percentage, it became as 100 of total X. And what is her saving actually? That is 400. Now we will find it out. This is X upon 10 equals to 400. 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा because it is in division here. So when you will multiply with 400, it will be 4,000. So what is the salary of Meeta? So Meeta's salary is ₹4,000. Okay, I hope you have understood it well. The last question of this exercise: a local cricket team played 20 matches in one session. Total number of matches played. Total number of matches played. टोटल कितने मैच उन्होंने प्ले किए हैं? दे हैव प्लेड 20 मैचेस. एंड आउट ऑफ दैम दे इफ इट वॉन्ट 20% ऑफ दैम, परसेंटेज ऑफ विनिंग. देखो ये परसेंटेज है विनिंग की. परसेंटेज ऑफ विनिंग व्हाट, हाउ मच? दैट इज 25%. एंड नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन. नंबर ऑफ मैचेस वो पूछ रहे हैं कितने मैच उन्होंने जीते. ये तो परसेंटेज गिवन है. देखो नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? 25% ऑफ टोटल मैचेस कितने हैं? 20. 25% ऑफ टोटल, क्योंकि विनिंग की निकाल रहे हैं ना, तो हम इसको कट कर सकते हैं. 20 के टेबल से आप इसको कट करेंगे. 21 × 20, 25 × 100, 5 × 5, 5 × 5 = 25. So how many matches they have won? They have won 5 matches out of 20 matches. Fine. So how many matches they lose? They lose 15 matches. Okay, I hope you have understood it well. Student, in case you find any difficulty, you may ask me in the comment section. And if you like the video, if you find it useful for you, if you find that the method was very easy for you, then you please do not forget to like, share and subscribe the channel for my motivation. We will meet in our next video. Till then, goodbye and take care of yourself.